Hello students, in today's video we will talk about chapter number 4 for class 10th from the diary of Anne Frank, and this has been taken from her autobiography, that is from the diary of a young girl. This chapter is full of the pains or hardships faced by Jewish families. It was because of Hitler's oppression. If we talk about Anne Frank, she is quite known to the whole world. She is one of the prominent writers of 20th century. She gave the world a very nice gift, a diary. And in that diary, she had mentioned the realities full of pains and difficulties faced by so many people at that particular time. So students, let us see how this diary became a vital and precious present for her and for the rest of the world. For that, we have to see the summary, which is quite important for all of you to understand. So here we go. So students, now we'll talk about the summary of the chapter from the diary of Anne Frank. In the chapter from the diary of Anne Frank, the writer Anne Frank describes about her true friend a diary. This lesson is an excerpt from Diary of a Young Girl or the Diary of Anne Frank. It is an autobiography that was first published in 1947. She gives the detail of every aspect of her life at the time of attack of German over Poland. Her family was in problem and ultimately hid itself. At that time, she started to write in her diary. She spent her adolescent years away from outside world. ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके राइटर हैं एन फ्रैंक, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हैं, अपनी ट्रू फ्रेंड डायरी के बारे में बताती हैं, और ये एक पार्ट एक्सट्रैक्ट किया गया है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, और ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो। और ये सबसे पहले 1947 में पब्लिश किया गया था, जिसमें वो डिटेल देती है अपनी ज़िंदगी की कि किस तरह से जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था और उसकी ज़िंदगी और उसकी फैमिली की ज़िंदगी मुश्किलों के साथ भर गई थी। एट दैट टाइम शी स्टार्टेड राइट इन हर डायरी, और उस समय उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया और उसने अपनी एडोलेसेंट ईयर्स जो हैं वो सारे के सारे आउटसाइड द वर्ल्ड, नॉर्मल वर्ल्ड से हटकर अपने आप को छुपाकर बिताए। Now we'll talk about the important characters in the chapter. First is Anne Frank, the 13 years old Jewish girl who writes a diary while she is hiding in Amsterdam from the Nazis during World War II. She was born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. Margaret Frank, Annie's sister, she is 3 years older than Annie. Otto Frank, Annie's father, he is a Jewish businessman who left Germany after Hitler's rise to power, hoping to find refuge in Holland. Mrs. Frank, Annie's mother, she is the source of many conflicts with Annie during the 2 years that the family spends in hiding. Mr. Van Daan, a Jewish business and an associate of Mr. Frank. Mr. Keesing, her teacher who punishes Annie as he gets annoyed by her talkative nature.
Anne Frank and her diary. Anne Frank, a 13-year-old girl, was gifted a diary by her father. So she happily decided to write in her diary, which she entitled to be her best friend in, and named it Kitty. This is the name you have to remember. She started writing in June 1942. In her first entry, she expressed her desire to confide everything to the diary, as she hadn't been able to do so to anyone else. She felt that paper had more patience than people, and this is an important message that this chapter gives. Secondly, she thought that nobody would be interested in her diary as she was a small girl and the world will consider her remarks immature. एन फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी जिसे उसके फादर ने एक डायरी गिफ्ट की थी, तो उसने बहुत खुशी के साथ हैप्पीली डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और साथ में उसका नाम रखा किटी। और उसने जून 1942 में लिखना स्टार्ट किया। इन हर फर्स्ट एंट्री शी एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू कन्फाइड एवरीथिंग। अपनी पहली एंट्री में उसने विश्वास दिखाया उस डायरी पे और ऐसी बातें लिखी जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, यानी कि उसे बहुत अच्छा वो फ्रेंड मानती थी। और उसका ये मानना था कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होती है। सेकेंडली, उसने ये सोचा कि कोई भी उसकी डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ 13 साल की थी और वो जब लिख रही थी तो सब लोगों ने यही समझा होगा कि 13 साल की लड़की किस तरह की डायरी लिखेगी और उसमें क्या सच्चाई होगी, उसके रिमार्क्स इमेच्योर होंगे। इसलिए ये सब भी उसके मन में था, लेकिन फिर भी उसने डायरी को लिखना स्टार्ट किया था। Glimpses of a childhood and family. And called her father as the most adorable and motivating personality. He was 36 when he married her mother, who was just 25. She had an older sister, Margaret. You have to remember this name. This is very important from your examination perspective. She had about 30 people around her, but she had no true friend. They lived in Frankfurt for some time, but as they were Jewish, they had to migrate to Holland for refuge. Her mother stayed with her grandmother, but went to Holland to her father. अगर हम एन फ्रैंक की ज़िंदगी और उसकी फैमिली और उसके चाइल्डहुड की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उसकी ज़िंदगी में उसके फादर थे, क्योंकि वो अपने फादर को काफ़ी मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मानती थी। वो 36 इयर्स के थे उसके फादर जब उनकी मैरिज हुई थी और उसकी मदर की एज 25 थी और उसकी एक बड़ी सिस्टर भी थी, मार्गरेट। She had about 30 people around her, but she had no true friend. और वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जैसे वो जूइश थे इसलिए उनको हॉलैंड माइग्रेट होना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी में जूइश फैमिलीज़ पे अत्याचार शुरू हो चुका था। अत्याचार किसका? हिटलर का। Her mother stayed with her grandmother but went to Holland to her father. तो उसकी मदर जो थी वो ग्रैंडमदर के साथ रही। And schooling, she was sent to Montessori nursery school. She stayed there until she was 6. At her farewell, she and her headmistress Mrs. Cuperus had tears in her eyes. काफ़ी इमोशनल सिनेरियो था ये मोंटेसरी नर्सरी स्कूल का, जहाँ पर हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस काफ़ी इमोशनल हो गई थी और रोने लग पड़ी थी। Her grandmother's demise. In the summer of 1941, her grandmother
fell ill. She had to be operated upon, but she died in January 1942. It gave Anne a shock, and she did not write her diary in that period. But after that, she wrote again as she thought of her grandmother's love and affection. ग्रैंडमदर की डेथ की बात की जाए तो समर ऑफ 1941 में काफ़ी बीमार हो गई और उसके बाद उनकी डेथ जनवरी 1942 में हो गई। इस बात से एन को काफ़ी शॉक महसूस हुआ और कुछ समय तक उसने डायरी नहीं लिखी और फिर अपनी ग्रैंडमदर के लव और अफेक्शन को याद करके उसने डायरी को दोबारा लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया। हर व्यू अबाउट टीचर्स, अगर हम एनी के व्यू की बात करें टीचर्स के बारे में तो एनी वॉज नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, सो शी एंड हर फ्रेंड्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट इट। बट एनी सोचती थी कि वो आराम से पास हो जाएगी। शी ऑलवेज कंसिडर टीचर्स टू बी द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स, हमेशा यही सोचा कि टीचर्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज होप। द लाइफ ऑफ एनी फ्रैंक वॉज फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज, repercussions, but still there were some humorous parts. थोड़ी हंसी मजाक वाले पल भी थे उसकी स्कूल लाइफ के, और उसमें से एक था पनिशमेंट बाय मिस्टर कीसिंग, मैथमेटिक्स टीचर। And he was a good student and had a good relationship with all the teachers except Mr. Keesing, who taught her maths. He was always annoyed by her talkative nature. He used to give her extra homework as punishment. He asked her to write an essay on a chatterbox. He also put a slip of it on her bag to remind her about it. Completion of homework. Annie was unable to understand what she could write in the essay. She started writing to consider it the necessity. She wrote the 3 pages for her satisfaction. She defined it as a feature of a student and also mentioned that she inherited this trait from her mother, who also used to talk much. Wow, what a funny answer that she gave. Homework given as a punishment again. दोबारा उसे पनिशमेंट दी गई क्योंकि उसने पहले ये आंसर किया था कि ज़्यादा बोलने का या बक बक करने का ट्रेट उसे उसकी मदर से मिला है। इस पर किसिंग काफ़ी अनोड हो चुके थे और काफ़ी रिएक्ट भी किया था उन्होंने। लेट अस सी नाउ मिस्टर किसिंग read Annie's essay in front of class and laughed at it. He gave her another essay as a punishment on the topic, an incorrigible chatterbox, and quack, 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 said Mr. Chatterbox. So ये काफ़ी funny topics उसे दिए गए, लेकिन सबसे भी हैरानी वाली बात ये थी, हंसाने वाली बात ये थी कि एनी ने जो जवाब दिए थे इस पनिशमेंट के वो भी काफ़ी हंसा देने वाले थे। स्टूडेंट को बदलने चले किसिंग खुद अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर बैठते हैं और अब मिस्टर किसिंग ने भी काफ़ी फनी वे में बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ विल टॉक अबाउट एनी मॉक्स मिस्टर किसिंग विद हर होमवर्क इन अ प्लेजेंट वे। यही वो किस्सा है जहाँ पे मिस्टर किसिंग ने भी उस मोमेंट को एंजॉय किया था और ये मॉकरी की थी, थोड़ा फनी वे में इमिटेशन की थी एनी ने। And he wanted to write something interesting and attractive this time. So with the help of a friend who was good at poetry, she wrote an essay in verse. It was about 3 ducklings going deaf because their father duck beat them as they quack way too much. Mr. Keesing took the joke in the right way and didn't bother and for
talking after that incident. She was not even given an extra homework after that. So this is one of the funny moments. Okay, so students, you have liked this video, I'm quite sure about that, and you will definitely subscribe to my channel. Don't forget to subscribe, because if you have watched this video, you will come to learn so many things regarding how we have to come out of hardships and difficulties, कि किस तरह से हमें ज़िंदगी में मुश्किलों से लड़ना है। एनी फ्रैंक ने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि किस तरह से हम रियलिटी को दुनिया के सामने ला सकते हैं। हालांकि वह जीवित नहीं रही थी, लेकिन उसके फादर ने उसको पब्लिश करने के लिए दिया था। और सबसे ज़रूरी बात इसमें हमें यही समझनी है कि सो अल्टीमेटली वर्ल्ड ने एनी फ्रैंक की इस कोशिश को काफ़ी पसंद किया और आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं।